What we have started last time, we have started this fuzzy rule based system, that fuzzy controller. You must know what is antecedent and what is consequent. Then this fuzzy logic controller is work based on the numbers of rules, multiple canonical form of rule based system. So how many? Then we have seen the multiple adjacent, multiple disjunctive adjacent, multiple conjunctive adjacent, multiple disjunctive adjacent. Then we have seen the aggregation of fuzzy rule. Right? Aggregation is nothing but combining all the rule. Are you getting my point? हम लोगों ने ये we have started the fuzzy logic controller. Then I started the graphical technique for of inference. Uh, that is nothing but a controller. So I started with the Mamdani controller, Mamdani, Sugeno, and Sukamoto. Okay, so my idea is just give you the what is fuzzy logic controller. Then we started this technique of inference. Before going for the further techniques, let's understand what is this fuzzy logic controller. Fine, we have started this fuzzy logic controller, but we don't know what is it that actually the logic controller. Fine. Reply. So we started the fuzzy logic controller. I hope you know what is the fuzzy controller. But let's understand in detail how to develop this, how to design and develop this fuzzy logic controller. What things that we need to consider while we are developing the fuzzy logic controller. Fine or not fine? Good morning, all of you. So as I told you that we have started the fuzzy controller, fuzzy rule based system. Then I already told you that these are system is nothing but a numbers of combination of rule. After combining the rule, we get some output. So there are three techniques to technique of graphical inference: Mamdani, Sugeno, Tsukamoto. But before going for the Mamdani, Sugeno, Mamdani, we already know what is Mamdani because तुमको पता होना चाहिए कि मामदानी कैसे वर्क करता है. Now लेट्स अंडरस्टैंड ये रूल्स कंबाइन होके फाइनली ये मामदानी सिस्टम में जाते कैसे हैं. So that is nothing but a design and development of fuzzy logic controller and fuzzy reasoning tool. Okay, shall I start? Yes or no? हाँ या ना बता दो. Okay. Okay. So the fuzzy logic controller developed by Mamdani and Esslin around 1975. So performance how the performance of this is related. कैसे fuzzy logic controller का fuzzy logic controller will design and develop. So the fuzzy logic controller performance is based on knowledge base which consists of database and rule base.
What is knowledge base? Suppose you are a child. If someone taught you, if someone show you the animal, so you have a knowledge of animals. If someone show you the dog, then according to the features of dog, you can identify that this is a dog. If someone show you the cat, according to the features of cat, you identify that particular animal is a cat. You can differentiate dog and cat. Why? Because you have a knowledge that which element have which animal having which features. So that is nothing but a knowledge base. So what knowledge consists of? The knowledge is consist of database and rule. What kind of database? Databases, first is dog and cat, both are animal. Dog same features, four leg, but dog having some different features, mouth, uh, face, height changes होते हैं. That is the database. And rule, if height is this and height is big, then it is dog. Height is small, then it is cat. Fine. That kind of rules. If you don't understand this, we will understand by one simple example. But the Fuzzy Logic controller is performance is developed by Mamdani and Aslin around 1975. The Fuzzy Logic controller performance depends on the knowledge base, which consists of database and rule base. Are you getting my point? You already know what is rule based, right? हम अभी तक लॉजिक में यही कर रहे हैं. We are writing a rule, we are writing a proposition, we are proving a rules. Yes or no? Reply. Other people, 46 people are there. I want 46 reply. Animesh, Himanshu, Vedansh, Vikas, Yash, Rishabh, जो भी हो, all of you reply. 1 to 4, कितने people है? 1 to 50, 60, 61. How many are there? Reply. Okay. So the performance is based on knowledge based and consists of database and rule based. Now let's understand what is database and rule based. Suppose take the example of room. Suppose तुम्हारे रूम में अभी गर्मी लग रही है, ठीक है? So we have a AC. Already we have a AC. AC का टेम्परेचर हम कैसे रखेंगे? According to the temperature and humidity, we can maintain what is the temperature of our room. So we will supposed to make a system, and according to that system AC control will be work. Okay, सिस्टम क्या बोल रही है कि भाई रूम का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम एसी का वाल्व होगे, एसी का वाल्व खोलेंगे, ठीक है? ओपन करते जस्ट if people are more, then we can open the full valve of AC for ज्यादा हवा टेम्परेचर के लिए, right? So take the example of AC controller, that according to the temperature and humidity we can maintain valve of valve. Fine. So what thing that we need to consider, इतना समझ में आया? What we are talking about? We talking about AC controller. Fine. So what are the variable? What are the key points that we have to take care while we develop the AC controller? Are you getting my point? Reply. Okay. So we have to identify the variable. So the first variable is if temperature in room, humidity in room. First variable that we identify, what is the temperature of room? What is the humidity in room? What is the temperature outside the room? What is the humidity outside the room? What are the thermal conductivity of wall? Then number of people sitting in the particular room. These are the variable that we need to identify. If people are more, then we supposed to पूरा वाल्व खोलना पड़ेगा एसी का, right? So these are the design variable that we need to identify developing any system. Let's take the example of signal. ठीक है, traffic signal. I already told you the traffic signal having multiple rules. So red, green, yellow light का क्या rule है? If red light is there, then stop. Green is there, then start. लेकिन कौन से चार, अगर चार रास्ता होगा, पता है 4 लेन रोड होता है, तो उसके ऊपर भी हमको कितने सारे कंट्रोल्स, कितने सारे वेरिएबल्स वी हैव टू डिजाइन कि अगर single lane is working, then other lane must be stopped. This kind of variable that we need to identify before developing any system. So that variable is nothing but a kind of database.
and knowledge that we needs to identify. So according what we are doing, this is our system. The system is two inputs, system having two inputs, temperature, humidity. The fuzzy logic controller will work, and the fuzzy logic controller give the output, the angle of valve opening. According to the temperature and humidity, the fuzzy logic controller decide how what angle the valve will be open. ठीक है? अगर अगर टेम्परेचर इज हाई, ह्यूमिडिटी हाई, तो पूरा 180 डिग्री पे वाल्व ओपन होगा. गेटिंग माय पॉइंट? If temperature is medium, humidity is medium, then angle will be open on 90 degree. Getting? Yes or no? Fine. So this is the system. These are the key variables that we need to consider. Now let's decide one by one. What are the temperature uncertainty? What are the uncertainty of temperature, and what are the uncertainty of humidity? So that in temperature we have temperature around 10 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. Okay, so I say that if the element having a 10 degrees Celsius temperature, then I can say the membership, that is linguistic term, is also called the linguistic term. Then we assign the membership function value to this linguistic term. If temperature element having 10 degrees Celsius, then the linguistic term is low. If a temperature is around 25, the linguistic term is medium, and temperature is around 50, then linguistic terms is high. Are you getting my point? We are having a temperature between 10 to 50. In temperature, we have a range 10 to 50. And I decide that 10 hai to low, 25 hai to medium, and 50 hai to high, and low, medium, high having some membership function value. This is the trapezoidal representation. Fine? Itna samajh mein aaya? So this low, medium, high is called linguistic terms. Getting my point or not? So we got one input, temperature. Now let's talk about humidity. Humidity is again same thing. I have a humidity around 5 to 25 some units. Okay. So the linguistic terms of humidity, if it is 5 then low, medium so around 17, 15 then it is medium, 25 then it is high. So this is the two input, temperature and humidity. According to the temperature and humidity, we have a linguistic term. So the database of humidity, this is the database of humidity. Getting my point or not? Yes or no? Now we got all the database. हाँ बोलो. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये ऊपर मतलब FLC लिखा हुआ है उसमें टेम्परेचर ह्यूमिडिटी से बाकी वेरिएबल्स भी तो इनपुट होंगे ना? क्या बोल रहा है? मैम जो एंगल ऑफ वाल्व ओपनिंग है उसके लिए वेरिएबल्स तो सारे इनपुट होंगे ना, जितने भी वेरिएबल्स हैं? हाँ 2 मिनट रुक जा, पहले मुझे समझा लेने दे. ठीक है, इतना समझ में ऑल ऑफ यू द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वी गिव अ इनपुट, देन व्हाट इज द आउटपुट? सो द आउटपुट इज एंगल ऑफ वाल्व. So the angle of valve will be small, medium and large according to the possible condition. Then how to decide how many conditions are there? Are you getting my point? Here how many linguistic terms are there? Tell me how many linguistic terms are there? Linguistic terms कितनी है? Linguistic terms. Other people? Linguistic terms मतलब 3 linguistic terms. Getting low, medium, high. We have 3 linguistic terms in temperature and same 3 linguistic terms in humidity, low, medium, high. 3 into 3, 9. So total we have 9 possible rule or condition of variable. We have total 9 possible rule. So according to that 9 possible rule, let's make some statement. The statement is if temperature is low and that humidity is medium, then angle of valve is small. Getting? So this how we make a 9 possible statement, and according to the 9 possible statement, we decide that system fuzzy logic controller will decide
that what kind of statement that we need to take place. तो हमको क्या करना है, टेम्परेचर लो, ह्यूमिडिटी मीडियम, एंगल ऑफ वाल्व इज एस. If a temperature high and humidity is high, then angle of valve is h. Then what kind of statement will be decided? That is decided by this fuzzy logic controller. How many statement will create it? 3 into 3, 9 statement. If temperature is low, humidity is low, then angle of valve is solved. If temperature is low, humidity is medium, then angle of valve is small. If temperature is high, humidity is low, then angle of valve is medium. This kind of possible statement, total 9 possible statement we can make. And according to the 9 possible statement, now the fuzzy logic controller work on that statement and find out which statement that we going to select to in terms of give the output. समझा? तो वो स्टेटमेंट इफ एल्स वाला स्टेटमेंट है दैट वी ऑलरेडी लर्न लास्ट टाइम. हमने मामदानी सिस्टम में वही किया था. इफ इनपुट इज दिस and out then fuzzy set is this, input is this, fuzzy set is this, then output is this. Fine. So Mamdani system combine all the inputs and according to the end find out the minimum and finally get some defuzzified value. That defuzzified value is nothing but the output. Getting my point? Yes or no? We got 9 statement, right? 9 statement में 9 statement हमने बना लिए. Now fuzzy logic controller आएगा. The fuzzy logic controller will decide what graphical technique we will use and which graphical technique that decide what will be the output. Getting my point? ठीक है? The performance of fuzzy logic controller largely depend on the rule based optimizing and database is fine tuning process. हम लोग डेटाबेस चेंज भी कर सकते हैं, लो मीडियम हाई. वी कैन चेंज द डेटाबेस अकॉर्डिंग टू द ट्यूनिंग ऑफ डेटाबेस. वी कैन फाइनली गेट सम सिस्टम. गेटिंग? हमने अभी तक जो भी पढ़ा हमने डायरेक्टली टेक्निक्स पढ़े कि क्या क्या टेक्निक है. नाउ व्हाट वी आर लर्निंग हाउ द टेक्निक विल अप्लाई इन रियल वर्ल्ड सिस्टम. गेटिंग? ओके. तो देयर आर, इतना समझ में आया? गेटिंग? जिनेंद्र, अदर पीपल, तन्मया, आशीष, राहुल, एकता, प्रवीण, तन्मया, ध्रुव, जीत, सुनील, दीप्ति, संजीव, आदित्य, अपूर्व, मनीष, यशवी, जॉय. फाइन. लास्ट में बता दूंगी. लो मीडियम हाई इज नथिंग बट सर्टेनिटी. पहले लेक्चर से वही चल रहा है. एप्पल का कलर रेड, लाइट रेड, मीडियम रेड, काइंड ऑफ. सो आई गिव सम टर्म दैट इज लो मीडियम हाई, टेम्परेचर लो, टेम्परेचर मीडियम, टेम्परेचर हाई. दैट इज नथिंग बट अनसर्टेनिटी which containing some fuzzy value. That fuzzy value of temperature and humidity fuzzy value, we combine all the temperature and humidity fuzzy value. We put the if and else statement. Now fuzzy logic controller will decide which if and else statement will selected and give us output. So how that we will decide? Now let's see. There are two form of fuzzy logic controller. First is linguistic fuzzy controller, fuzzy modeling. The first is linguistic fuzzy modeling and second one is precise fuzzy modeling. Now what is the linguistic fuzzy modeling? We already learned the Mamdani approach. Mamdani क्या करेगा? सारे if else statement को combine करेगा और उसमें से जो भी मिनिमम अप्रोच है, मिनिमम फाइंड करेगा. मिनिमम को फिर हम क्या करेंगे? कंबाइन करके डिफजिफिकेशन करेंगे. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? एंड मतलब मिनिमम. यहाँ से 0.3 मिनिमम उठाया, यहाँ से कौन सा 0.4 मिनिमम उठाया, 0.3 0.4 को कंबाइन कर दिया और उस कंबाइन से हमने एक सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ सम कोई भी डिफजिफिकेशन अप्लाई करके हमको एक क्रिस्प वैल्यू मिला. सो दिस Mamdani is doing this. That linguistic fuzzy modeling, that is nothing but a Mamdani approach. Fine. So the Mamdani approach is the saying that
इट्स हैविंग अ हाई इंटरप्रेटेबिलिटी. हाई इंटरप्रेटेबिलिटी मीन्स उसके अंदर जो इनपुट आएगा दैट इज इंसिडेंट, दैट इफ I1 is L low and I2 is medium, then output is high. Fine. तो ये डायरेक्टली क्या बोलता है कि भाई ये जिसमें जो भी मिनिमम आएगा वो भी आउटपुट है, उस मिनिमम को कंबाइन करके डिफल्सिफाइड वैल्यू निकाल देगा. बट दैट इज नॉट गुड अप्रोच एट द टाइम. ऑल द टाइम वो गुड अप्रोच नहीं होता है कि भाई यहाँ से मिनिमम सारे स्टेटमेंट में से मिनिमम ही लेके उसको कंबाइन करके करना है. So that is not a good approach. So the linguistic fuzzy modeling, where Mamdani is having interpretability is high, but whatever the output accuracy is low. In Mamdani approach, the interpretability, that whatever the incident is very precise, but the output जो भी efficiency आएगा that is very low. Okay, getting? समझा ये नहीं समझा? इसीलिए मैंने पहले मामदानी करवाया कि भाई मामदानी क्या होता है. Getting or not? Okay. So, Mamdani approach. If an else statement contain what? Mamdani approach. If an else statement contain what? End operation. End operation means what? End operation means what? Conjunction. कंजक्शन में क्या करना है? मिनिमम फाइंड करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है? मिनिमम. तो मामदानी क्या करता है? हर एक स्टेटमेंट का, सपोज 9x3x3 मामदानी के पास 9 स्टेटमेंट है, तो वो 9 स्टेटमेंट में ऐसी ही फजी वैल्यू लेगा जो मिनिमम है. उसका काम यही है कि वो मिनिमम में उठाएगा. जैसे कि टेम्परेचर इज हाई एंड ह्यूमिडिटी इज लो, तो वो सही है दैट वो he will take the humidity low only and it gives some conclusion that AC valve is medium. Fine. So according वो सिर्फ क्या करता है? एक ही साइड देखता है. भाई मिनिमम मिला, देखो यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू 0.5 मिला, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू 0.3 मिला. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दिस 0.5 he will taking care of this 0.3 only. मामदानी का जो भी मेथड है वो सिर्फ मिनिमम पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है. वो सोच रहा है कि मुझे मिनिमम मिलेगा और वो सारे मिनिमम को कंबाइन करूंगा, देन आई गॉट सम एफिशिएंट क्रिस्प वैल्यू. बट दैट इज नॉट ऑल टाइम गुड अप्रोच. जैसे कि कुछ ऐसा उसने रूल लिखा, टेम्परेचर इज हाई, देन टेम्परेचर हाई, फिर ह्यूमिडिटी हाई. तो टेम्परेचर हाई, ह्यूमिडिटी हाई, द एंगल ऑफ वाल्व विल हाई. फाइन. 9 कॉम्बिनेशन में एक कॉम्बिनेशन तो गलत हो सकता है. जैसे कि टेम्परेचर इज लो, ह्यूमिडिटी इज लो एंड ह्यूमिडिटी इज मीडियम, एंड ही विल कंक्लूड बाय चांस दैट एंगल ऑफ वाल्व इज हाई. सो इट इज करेक्ट. कुछ ऐसा कंक्लूजन निकाल दिया जो करेक्ट नहीं है. मामदानी इज जस्ट फोकस ऑन सिंगल वैल्यू. मामदानी फंक्शन मेथड्स कुछ अप्लाई नहीं कर रहा है. मामदानी इज जस्ट सेइंग मिनिमम उठा लो, फिर कंबाइन करो, सारे मिनिमम को उठाओ, मिनिमम के सारे ग्राफ के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो और उस कॉम्बिनेशन में एक डिफल्सिफाइड आउटपुट निकालो. दैट डिफल्सिफाइड आउटपुट विल बी योर क्रिस्प वैल्यू and give us as an input to the fuzzy logic controller. So it is saying that the interpretability of incident is very high. वो precise है, but जो भी output आ रहा है comparison करेंगे तो comparatively the output will be very low. You know the comparison study होती है that एक का एक मामदानी सिस्टम उसने बहुत सारे इनपुट्स पे लगाया, कुछ सिस्टम के लिए वो अच्छा चल रहा है, but for some system it's not working good. Fine. So the linguistic fuzzy modeling Mamdani were having high interpretability, but the accuracy is low. समझा? क्यों लो? वो तुमको ये सुगेनो अप्रोच पढ़ोगे तब पता चलेगा. फाइन. अभी समझ में आया? नहीं समझा तो फिर ये देखो. सेकेंड अप्रोच इज प्रिसाइज फजी मॉडलिंग. So the precise fuzzy modeling is Takagi and Sugeno approach. This Sugeno approach I already told you, that also called Takagi and Sugeno approach. Here Takagi and Sugeno approach वो क्या कर रहा है? यहाँ पे क्या है? They just directly conclude that temperature is I1 is L
and I2 is M, then output is high. यहाँ पे ये क्या कर रहा है? That if I1 is low and I2 is M, then output is function of I1 and I2. It will consider I1 also. Here it will not consider any high value. It is consider only medium value or low value. समझा? The precise, why it is precise? Because here it's only consider minimum value. Here it's not consider the minimum value. It is consider the function of this both inputs. Samjha all of you? That's why it's called precise fuzzy modeling. The problem of precise fuzzy modeling is whatever the interoperability is low, but the whatever the output is very high accuracy. It's having high accuracy. Getting it is easy. अगर समझ में आया तो easy. Reply. Should I move forward or you have any doubt? So, बोलो यार, तुम लोग एक रिप्लाई नहीं कर सकते? yes or no? I won't reply yes or no. नो तो नो, यस तो यस, बोलो फटाफट. रिप्लाई नहीं समझा. टू form of fuzzy logic controller: linguistic fuzzy modeling and precise fuzzy modeling. The linguistic fuzzy modeling having high interpretability and low accuracy, but the precise fuzzy modeling, whatever the input interpretability is low, but whatever the output is very high. Yes or no? समझा नहीं समझा? बाउंस गया. रिप्लाई. तो यू हैव टू बी, थोड़ा शांति तो रखो. ये तो सिर्फ मैंने डेफिनेशन कराई, नीचे पूरा एग्जांपल है. शुड आई मूव फॉरवर्ड? तुमको समझना है नहीं? बोलो रिप्लाई यस और नो. श्रव्या, अजिता, वामसी, वत्सल. तो तुम लोग बोल नहीं सकते क्या? मैं कब से पूछ रही हूँ. Okay, let's understand the Mamdani approach of fuzzy logic controller. Okay, टर्म्स याद रखो कि मामदानी क्या क्या यूज करता है. पहले तो हमको पता है सारे इफ एंड एल्स रूल करता है. फिर उसके बाद वो क्या निकालता है? इफ एंड एल्स रूल है उसके पास. इफ एंड एल्स रूल है, यस और नो? वो इफ एंड एल्स रूल के बाद वो क्या करता है? इफ एंड एल्स रूल को मामदानी अप्रोच लास्ट टाइम पढ़ाया ना. इफ एंड एल्स के बाद कंजक्शन करता है. ऑल ऑफ यू रिप्लाई, अदर पीपल रिप्लाई. मामदानी अप्रोच इफ एंड एल्स स्टेटमेंट उसको मिल गया, फिर वो क्या करेगा? वो सारे इफ एंड एल्स स्टेटमेंट को प्लॉट करेगा. यस और नो? यस. फिर वो उसमें से क्या निकालेगा? मिनिमम. यस और नो? अभी रिप्लाई दिया. they get the minimum. After getting the minimum, they combine the all minimum and do the defuzzification. This is the approach of Mamdani. But वो करता कैसे? ठीक है. So how many things that he needed? First is he needed this. Let's understand this. First he needed rule based. Rule based system, that is if and else rule. Then he need a fuzzy inference engine. Then he need a defuzzification module. Then process to be control and fuzzification module. Okay. So let's start one by one.
तो पहले क्या होता है, सो दिस प्रोसेस टू बी कंट्रोल, दिस प्रोसेस टू बी कंट्रोल, ये जो प्रोसेस टू बी कंट्रोल है, this process to be controlled, the work of process to be controlled is to identify what is incident and what is consequent. That incidence is nothing but a condition, and according to the condition what action is take place. Fine. ये सारी चीजें प्रोसेस टू बी कंट्रोल आइडेंटिफाई करता है. लेट्स अंडरस्टैंड बाय वन एग्जांपल. फजी रूल बेस्ड सिस्टम. Are you getting my point? How many things we needed? The fuzzy logic Bamdani controller needed the fuzzy rule base, inference engine, fuzzification module, and process to be controlled. Don't worry about this graph. Let's understand one by one. So first of all, there are some steps. Okay, steps involved in working cycle of fuzzy logic controller. So first we identify the condition, also known as incident, and action, also known as consequent variable of the process. ठीक है, वो फाइंड करेगा what are the consequence and what are the incident and what are the consequence. Let's understand this by example. Suppose the temperature is one of the example. The temperature is rising from 10 degrees Celsius to 50 degrees Celsius, and it will say the low, medium, high are the linguistic terms. Okay, so हमने low, medium, high को हमने क्या किया, we give some points value. Suppose low is 0.1, medium is 0.5 and high is 1. ये हमने क्या किया, membership function दे दिया. This process is called what? Reply. Low, medium, high करके हमने सारे टेम्परेचर, लैंग्विस्टिक वेरिएबल हमने सब कुछ असाइन कर लिया. ठीक है, हमने इफ एल्स स्टेटमेंट भी बना लिया. पहले हमने, हमारे पास ये इनपुट है. ठीक है, ये द टेम्परेचर 10 डिग्री टू 50 डिग्री, लो, मीडियम, हाई, linguistic of the low, medium, high having a fuzzy value, that is uncertainty. So we got 10, that 0.1 divide by 10 plus 25 set 0.5 divided by 25 plus that 1 divided by 50 डिग्री सेल्सियस, राइट. हमको ये फजी सेट मिल गया. फिर हमने क्या किया, कंडीशन लिख ली. that if temperature is low, then open the valve. If temperature is medium, then valve is medium, and temperature is high, then valve is large. Temperature is low, valve is small, angle of valve is small. Temperature is medium, angle of valve is medium. The temperature is high, the angle of valve is high. हमको कंडीशन भी मिल गई. फाइन. ये एक टेम्परेचर, और जस्ट लाइक दैट ह्यूमिडिटी, हमको ये सारे, ये हमने बना लिया टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. ठीक है, हमने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का ये जो भी हमको लिंग्विस्टिक टर्म्स, फजी वैल्यू, जो भी फजीफिकेशन करना था, इफ एल्स स्टेटमेंट हमने बना लिया. हाउ मेनी इफ एल्स स्टेटमेंट वी गेट, हाउ मेनी इफ एल्स स्टेटमेंट विल गेट, कितने इफ एल्स स्टेटमेंट हो गए, अभी मैंने सिखाया इफ एल्स स्टेटमेंट, 9 if else statement हो गए. फाइन. सो दिस entire term जो भी हमने अभी टास्क किया, that task is called fuzzification. Now next step, the fuzzy inference engine comes into the picture. Okay, so what is the fuzzy inference engine? So the fuzzy inference engine calculate how many linguistic terms are there. So it find out the linguistic rule for temperature is 3, linguistic rule for humidity is 3, and you got the total 9 rules are there. And the fuzzy inference engine will decide how many rules are selected to go for fuzzified input. The fuzzy task of fuzzy inference engine is to select 9 में से कितने रूल्स हमको मामदानी, सुगेनो, कौन सी सिस्टम में डालने हैं. इफ दिस देन दिस एंड दिस, वो सारे स्टेटमेंट ये भैया सिलेक्ट करेगा, इन्फरेंस इंजन सिलेक्ट करेगा कि भाई ये 9 में से कितने, सपोज मुझे 4 रूल डिसाइड करने, तो विच 4 रूल विल फायर्ड डिसाइडेड बाय फजी इन्फरेंस इंजन. समझ में आया व्हाट इज फजी इन्फरेंस इंजन. तो फजीफिकेशन हमको पता है, मेजरमेंट ऑफ इनपुट वेरिएबल, कन्वर्ट द अप्रोच इनटू फजी सेट.
the measurement of uncertainty. Inference engine use a fuzzified measurement to evaluate the control rule stored in the fuzzy rule base. Which rule gets selected? It is decided by fuzzy inference engine. समझा? नहीं समझा? बाउंस गया. समझा? समझा नहीं समझा? तो दैट इज नथिंग. ये जो हमने रूल लिखे, इस ये वाला जो रूल लिखा है सारे, सपोज यहाँ पे 4 रूल हो गए, वो 4 रूल कहाँ से आएंगे? इन्फरेंस इंजन विल डिसाइड 9 में से कौन से 4 रूल सिलेक्ट होने वाले हैं. दैट विल डिसाइड बाय फजी इन्फरेंस इंजन. आफ्टर इतना समझ में आया? रिप्लाई यस और नो. जस्ट गिव मी रिप्लाई यस और नो. 46 people are there. 46 reply. Huh? Okay. So after getting this rule, what our task? We plot that rule. If and combine करके हमको जो भी ये सारे it doesn't mean only 2 statement and से combine हो गए. n number of statements are there in one rule. ऐसे n number of rule हो गए. n number यहाँ पे तो temperature humidity की बात करें. What if temperature, humidity, other factors, suppose heat, वो सब भी fuzzy set हो, so they all are end with each other. And in all the end, whatever the minimum are selected as a rule 1. That whatever this selected, here जो भी selection हुआ, here 0.5, 0.3, here we select 0.3. So whatever this triangle, this 0.3 is called fuzzified value. This triangle is called the fuzzified output or fuzzified value. इसकी फर्जिफाइड वैल्यू 0.3, यहाँ पे फर्जिफाइड वैल्यू आई 0.4, and we got entire combination of fuzzified value and that go for the defuzzification process. समझा? समझा नहीं समझा? बाउंस गया. Minimum मिला, that minimum is called fuzzified value. Okay, here we get the fuzzified value. We combine all the value and we got some fuzzified output. Okay, now this fuzzified output is some area, triangular shaped area होगा. ये triangular shaped area ही है. Yes or no? We got some triangular shaped area. Fine. So in triangular, now we have the need crisp value to given as a input to the fuzzy system. ठीक है, हमको crisp value find करनी है. Now how to find the crisp value? How to find a crisp value? फजिफिकेशन में क्रिस्प वैल्यू कैसे फाइंड करती है? आफ्टर डूइंग एनी फजिफाइड आउटपुट सब कुछ मिल गया, हमको अभी क्रिस्प वैल्यू कैसे मिलेगी? यार इतना सब पढ़ाया. डिफजिफिकेशन प्रोसेस करके फ्री क्रिस्प वैल्यू मिलेगी. फाइन. नाउ defuzzification module comes into the picture. This defuzzification value having action, that action is nothing but a crisp output. That crisp output is nothing but an angle of valve. वो कौन सा एंगल पे वाल्व खोलना है? That is the action. That action given as input to this process to be controlled. Condition, then again fuzzy module. This how this entire process will work. यहाँ से कंडीशन मिली, कंडीशन रूल बेस, फिर वो इन्फरेंस इंजन में गया, इन्फरेंस इंजन डिसाइड करेगा कौन से रूल यूज करने. उसके बाद जो रूल होगा फजिफाइड आउटपुट कहाँ जाएगा? डिफजिफिकेशन मॉड्यूल में. डिफजिफिकेशन वैल्यू मॉड्यूल गेट क्रिस्प वैल्यू. दैट क्रिस्प वैल्यू इज नथिंग बट एंगल ऑफ valve. That is the action that to be performed in fuzzification in entire process to be controlled. These are the action that we finally got in this fuzzy logic controller of Mamdani approach. Getting? So this is the step. Are you getting this or not? Fuzzification के बाद fuzzification मतलब हमको एंगल मिल गया, कौन सा अप्लाई करना है, वो एंगल एज अ इनपुट डाल दो सिस्टम में और योर सिस्टम विल वर्क. These are the Mamdani fuzzy logic controller approach. समझा नहीं समझा? बाउंस गया. So step-wise solution is identify the condition also known as incidence, identify the action also known as process,
देन फॉसिफिकेशन में वेरिएबल्स, कंडीशन, सेट क्या है, सब कुछ, अनसर्टेनिटी क्या है, वो सब कुछ दे दो. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फॉसिफिकेशन. देन दिस इफ रूल बेस्ड सिस्टम, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे वो इन्फरेंस इंजन डिसाइड करेगा. दैट इन्फरेंस इंजन विल गिव द आउटपुट, दैट इज फॉसिफाइड आउटपुट. That falsified output, the falsified output converted into the single crisp value. The process of designing and developing the fuzzy logic control is find out the relation between input and output of an engineering process. So we supply a set of input and we should able to determine set of output. So this is the entire process of fuzzy logic controller. समझा नहीं समझा बाउंस गया. समझा पूरा पूरा समझ लिया. रिप्लाई 46 47 आ गया अभी तो रिप्लाई. ओके. So this is nothing but a fuzzy reasoning process of Mamdani. Same thing. Fuzzy reasoning process of Mamdani. Okay. दिख रहा है? The fuzzy reasoning process. Rule 1 say if S1 is A1 and S2 is B1 then F dash is C1. Rule 2 is say S1 is A2 and S2 is B1 then F1 is C2. अभी हम सबसे पहले क्या करें, रूल मिल गया, यस और नो, रूल मिल गया, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे ये फजी वैल्यूज क्या है भाई उसकी. हमने उसकी फजी वैल्यूज आइडेंटिफाई कर ली. ठीक है. फजी वैल्यू आइडेंटिफाई करने के बाद इन्फरेंस इंजन पिक्चर में आएगा. इन्फरेंस इंजन डिसाइड करेगा कि भाई अगर 5-6 रूल हो गए तो 5-6 रूल में कौन से 3-4 रूल सिलेक्ट हो गए. वो इन्फरेंस इंजन कौन से तरीके से करता है वो हमारा बाकी है. ठीक है. बट इन्फरेंस इंजन का काम क्या है वो पता चला. What is the work of fuzzy inference engine that we will learn in detail. But the fuzzy logic controller need fuzzy inference engine. समझा? ठीक है. Other people. Other people. ठीक है. हमने फॉसिफिकेशन कर लिया, इन्फरेंस इंजन आ गया. इन्फरेंस इंजन क्या करेगा, डिसाइड करेगा कौन से रूल अप्लाई करने हैं. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, we got some fuzzified output of each and every rule. That fuzzified output are nothing but a firing string. This is called a firing string. The firing string is contain minimum of this both membership function value. This is called firing string. दिख रहा है? Firing string is alpha 1 is equal to minimum of mu a bar s dash s star and minimum of this. तो दोनों में से जो भी मिलेगा minimum, that is called the firing string. We combine all the firing string and we got the combined control action. That combined control action, ठीक है, the combined control action कैसे मिलेगा, we got the maximum area, तो हम सारे combine कर लेंगे and we got the all the maximum area. ये पूरा एरिया ऐसे कवर हो जाएगा. कंबाइन कर लिया सारों को. कंबाइन करने के लिए क्या करना है, what we supposed to do for combining, to combine both set what we apply. कंबाइन करने के लिए क्या अप्लाई करते हैं, in set theory to combine both the set what we will apply, union. So to combine both data in the fuzzy value what we apply, union. What we supposed to do for union in fuzzy value, nothing but a maximum. Yes or no? Union, that maximum of this both fire string, then this combination are applied as a defuzzification method. So we have already learned defuzzification method. How many defuzzification method we have learned? हमने कौन सी learn की, हमने कौन सी सीखी है. है
डिफॉजिफिकेशन मेथड एक था अल्फा कट centroid max that mean of maxima and maximum height. One more defuzzification methods are there. Centroid के भी पार्ट है, हमने centroid तो सीख ली, but other defuzzification method that we must know, that is center of sum. This is very easy defuzzification method that we will learn. Center of sum, ठीक है, center of sum ये पढ़ना है हमको. Mean of maxima. Alpha cut can be used for defuzzification. अल्फा कट तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली ना. अल्फा कट में जो भी वैल्यू होगी दैट इज डिफजिफाइड वैल्यू. हाँ वो मैंने एक बता दी, अल्फा कट से हम डिफजिफिकेशन कर रहे थे. बट अल्फा कट हाँ वो होती है, बट मेन मेथड अल्फा कट इज अ सिंपल मेथड, बट मेन मेथड इज सेंट्रोइड, मीन ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमम हाइट. इन द पार्ट ऑफ सेंट्रोइड one more method is that is center of sum that we will learn in next lecture. It is very easy, बहुत easy है, ठीक है. Mean of maxima we already know, this we already know, same thing, this we already know, center of sum. Fine. ये हम लोग अपना लेक्चर अभी नेक्स्ट कब है, फ्राइडे को. ऐसा नो फ्राइडे को है ना अपना लेक्चर. हेलो रिप्लाई, फ्राइडे को लेक्चर है ना. तो फ्राइडे को सेंटर ऑफ सम मेथड करेंगे. थोड़ा दिमाग शांत करके आना, ठीक है. इजी, समझ में आया, वेरी इजी. और ये सब इम्प्लीमेंट कहाँ होता है पता है, ये मामदानी, सुगेनो, सुकामोटो, ये सारे इनबिल्ड अवेलेबल है इन मैटलैब. बट वी मस्ट नो व्हाट इज मामदानी, सुगेनो, सुकामोटो. मामदानी, सुगेनो, सुकामोटो क्या है? व्हाट इज मामदानी, सुगेनो, सुकामोटो? मामदानी और सुगेनो नहीं, मामदानी, ताकागी एंड सुगेनो एंड सुकामोटो, ये सब क्या है? ग्राफिकल टेक्निक फॉर इन्फरेंस, graphical technique for controller. Okay, so today we have see how to design a controller, what we need in controller. Controller contain knowledge, database and rule base. What is database and rule base? Database is nothing but the linguistic terms, information. Rule base is nothing but a design variable that we need to consider. If linguistic terms, combining two linguistic terms compose that both product is possible rule. And after this possible rule, what rule will be applied that decided by inference engine. And after inference engine, give as a output a defuzzified output, give as a input to the defuzzification. Defuzzification finally converted to the CRISPR system. This is entire fuzzy logic controller. Without fuzzy logic controller, we are not able to develop any fuzzy system. So these are we talk about Mamdani. In after completion of center of sum defuzzification method, we go for the Takagi and Sugeno approach. And after that fuzzy inference engine पूरा क्या है वो. Then we go for the बड़ा then we go for the value assignment. Okay, समझा नहीं समझा, बाउंस गया. आज का लेक्चर में समझ में आया? रिप्लाई